Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying class 8 maths, chapter 8 comparing quantities. In our previous video, we learnt about compound interest and we came to know that it can be calculated by using these formulae. This is the formula for amount given as principal into 1 plus rate of interest upon 100 raised to power n, which is denoting the time here, and then compound interest is equal to amount minus the principal. Also, this compound interest can be calculated by using the simple interest formula. Here we find the interest for the first unit of time and then we add it into the principal to get the new principal for the next unit of time. So we can calculate it by any of these two methods, and obviously it's easy to use the formula, and so we will be using this formula. Today we will be doing the first 6 questions of exercise 8.3 based on compound interest. The first question is, calculate the amount and compound interest on this given situation. We have to calculate both amount also and the compound interest also. And here we have rupees 10,800 for 3 years at 12.5% per annum compounded annually. So first we write whatever has been given. Principal has been given equal to rupees 10,800. Then we have been given the rate of interest denoted by capital R. It's 12.5% per annum. Per annum means for the full year, and here we can simplify it. 12 2s are 24 plus 1, it will be 25 upon 2% per annum. Then the time, it is denoted by small n, and here it is given as 3 years. Now we have to find the amount also and the compound interest also. So we can use the formula now. We know that amount is given as principal into 1 plus r upon 100 raised to power n. Let us place these values in this formula. This is now 10,800 into 1 plus r की जगह हम रखेंगे 25/2. So it will be now 25 upon 2 into 100. ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 100 के साथ, and then in the power we have 3, which is the time here. Now simplify 25 and 100, they can be cancelled. 25 1s are 25 and 4 times 100. So here we have 10,800 into 1 plus 1 upon 8 raised to power 3. हमने इसको simplify कर दिया है. Now how to solve this? 8 will be multiplied by 1. We are taking the LCM here, and for that we will be multiplying now. 8 1s are 8. Let me write here 10,800 into 8 1s are 8 plus 1 upon 8 power 3. This will be equal to 10,800 and then 9 by 8 raised to power 3. Okay, now we need to simplify. Let us write here 10,800, और क्योंकि अब पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 9 by 8 into 9 by 8 into 9 by 8. Now we can cancel. Here you can see 2 4s are 8 and here 2 5s are 10, 4s are 8 and 2 zeros. हमने 2 से cancel कर दिया. Now next we can divide by 4 also. 4 1s are 4. Here 4 1s are 4. 1 will be left 14. 3s are 12. Then 2 will be left. 5s are 20 and 0. Next here we can again divide by 2. Here we can write 2 4s are 8, and on dividing by 2 we will get 2 6 are 12. Then 7s are 14 and 5s are 10. So in the end we are left up with 675 into 9 into 9 into 9 upon its 4 8s are 32. Now further on solving, what do we see here? ये हमें मिलेगा 675 into 9 cube, it's 729 upon 32. तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 32 से डिवाइड करेंगे. On multiplying you will see that we get it as 492075
and upon here we have 32. And now if you divide, you will get the answer as rupees 15,377.34. You can divide and check your answer. So this is the amount in this case. We also have to find the compound interest. It has also been asked, and we know that compound interest is given as amount minus the principal. And let us now write it here. Amount is equal to rupees 15,377.34 and minus the principal which is 10,800. कैसे माइनस करेंगे? देखिए आप, इसमें डेसिमल है और इसमें नहीं है, तो इसमें भी हम लगा लेते हैं आफ्टर द वंस प्लेस डिजिट, और फिर हम लगा लेंगे 2 zeros, और फिर कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? 0.34 और यहाँ पर 10,800. डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, इस तरह से लिखते हुए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. हियर वी विल हैव 3 4 7 7 13 minus 8 it's 5, cancel it, it will be 4, and here we have 4,577.34 rupees. Rupees 4577.34. This is the compound interest in this case. I hope it's clear. We take the next part. It is rupees 18,000 for 2.5 years at 10% per annum compounded annually. So again, first we write whatever has been given to us. We have been given the principal as rupees 18,000. Then we have been given the rate as 10% per annum. And then the time, which is denoted by small n. It is equal to 2.5 years. This time it is a fraction. तो पहले हम ये जो होल पार्ट है 2 years, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर रिमेनिंग हाफ ईयर का सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे. और एक और मेथड है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हम दोनों ही केसेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी फाइंड द अमाउंट फॉर 2 years. Obviously it will be principal which is 18,000 into 1 plus r which is 10 here upon 100 raised to power 2. This will be 18,000 into, यहाँ फिर से हम LCM लेते हुए ऐड करेंगे. 100 ones are 100 plus 10 और नीचे LCM आ गया 100 whole square. This gives us 18,000 into 110 upon 100 raised to power 2. तो आप देखेंगे कि ये जो रेट है ये 100 से ऐड होकर हम इस तरह से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और अगली बार हम इस स्टेप को डायरेक्टली करेंगे. नेक्स्ट वी कैन cancel the zeros here. This will be equal to 18,000 into 11 by 10 into 11 by 10. Cancel this 0, cancel this 0. Every time whenever there is a multiply sign in between, then we can cancel these zeros in the numerator and the denominator. ऊपर और नीचे ही cancel कर सकते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो. अगर बीच में प्लस या माइनस हो तब हम कैंसिल नहीं कर सकते, इसे ध्यान रखिएगा आप. नेक्स्ट वी हैव 180 into 11 square, it's 121. So let us multiply 18 by 121. Okay, then we will mark a 0 at the end. 8 ones are 8, 8 twos are 16, 1 carried, it will be 9, then 121. It's 8, 7, 11 and 2. So we can write it as rupees 2178 and 0. This is the amount at the end of 2 years. We also need to find the interest at the end of 2 years. For this we will subtract the amount and the principal. Interest after 2 years. It will be rupees 21780, which is the amount, minus the principal which is rupees 18,000. Minus कीजिए, it will be rupees how much? 780. Then 11 minus 8, it's 3,780. It is the compound interest for 2 years. अब half year अभी भी बचा है. So first we find the interest for remaining half year, and then we will find the total amount. How to find it? We need to use the formula for simple interest now. Interest, it will be equal to principal into rate into
time. Now the principal will be how much? It will be this amount at the end of 2 years. जो अमाउंट होगा 2 years के बाद वही नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रिंसिपल होता है. तो अब हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 21780 इंटू द रेट विच इज 10% और अब टाइम है हाफ ईयर अपॉन 100. हमने वही फॉर्मूला यूज किया है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. कैंसिल दिस 0, then we can cancel by 2 also, 1 time, here we have 2 ones are, then 0, 8 times 16 and 9 times 18. So it is rupees 1089. So total amount at the end of 2.5 years, total amount कितना हो जाएगा? देखिए आप, it will be rupees 21780. ये तो 2 साल के बाद का अमाउंट है और फिर ये तो इसमें ऐड होगा रुपीज 1089. दोनों ऐड होके टोटल अमाउंट मिलेगा हमें कितना? देखिए 9, then 8 and 8, it's 16, 1 carried, it will be 8, then 1 and 1, 2 and 2. रुपीज 22,869. ये तो हो गया टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 2.5 years. And we also need to find the total compound interest. For this, we will add up this interest, this one, as you can see. Let me mark it with a different color. This one and this one. This is the interest at the end of 2 years and this is the interest for the remaining half year. तो total compound interest कितना हो जाएगा? Let us write it. Total compound interest. We will add these two numbers. Rupees, how much? Let us add. 0 and 9, it will be 9. Then 8 and 8, it will be 16. 1 carried, 8 here. And then 3 plus 1, it will be 4. So 4,869. This is the total compound interest at the end of 2.5 years. Okay. Next, we can also solve this question by one more method. Let us take a new page and then I would like to tell you this also. In this case, the time is 2.5 years. Another method I am discussing. Okay. In this case, what we can do? Amount we can find at the end of 2.5 years as 18,000, which is the principal, into 1 plus 10 upon 100 raised to power 2.5. इकट्ठे ले लेते हैं पूरे ही टाइम को. This can be written as 18,000 into 1 plus 10 upon 100 raised to power 2. 2 full years के लिए तो रेट 10 ही रहेगा और रिमेनिंग हाफ ईयर के लिए हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं पावर को. This will again be equal to 18,000 into 110. We can write it directly now upon 100 raised to power 2. और यहाँ पर ये जो हाफ है पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इस रेट से, क्योंकि अब हाफ के लिए हमारा रेट भी हाफ हो जाएगा. जब टाइम हाफ ईयर है तो रेट भी हाफ हो जाएगा. तो एक्चुअली ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस रेट से और यहाँ से हमें मिलेगी 5 as the rate for the half year, remaining half year. This will give us 18,000 into, cancel this 0, 11 by 10 whole square into, here we will have 100, 1s are 100 plus 5, 105 upon 100. यहाँ से हमें मिल गया 18,000 into 11 by 10 into 11 by 10 into 105 upon 100. Cancel the zeros. ये 2 0 cancel हो गए, 1 0 cancel हो गया. Remaining we have it as 18 into 121 into 105 upon 10. देख रहे हैं आप? Now 18 into 121. We calculated it just now. It is 2178 into 105 upon 10 we have. Now we need to multiply 2178 by 105. Multiply and get the answer. 5 8s are 40, 4 carried. It will be now 39, 3 carried, 8 and 10. Then we can multiply by 1, 8, 7, 1, 2. Add 0, 9, 8 and 8, 16, 1 carried it 8, 2 and 2. So here we get it as equal to 228690 upon 10. Cancel this 0 and now you get the amount as how much? Rupees
22,869. It is the same answer that we got by doing in that method. Then the compound interest, it is amount minus the principal. This will be rupees 22,869 minus the principal, which is 18,000. Subtract, you will get it 869, and here we have 4. So this is the कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप 2 years का पहले अलग से निकाल लीजिए और रिमेनिंग हाफ ईयर का अलग से इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. इट्स अप टू यू नाउ. वी टेक वन मोर पार्ट हियर. This one, rupees 62,500 for 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly. Again, first we write principal here. It is rupees 62,500. But now this time the rate is being compounded half yearly. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था, we get the rate as half and then we double the time. Let us write. Rate कितना हो जाएगा? It's 8% per annum. पूरे साल के लिए तो है आपका रेट 8% और हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा? We will just get its half. 4% हो जाएगा पर हाफ ईयर. ये ज़रूर मेंशन करना है यहाँ पर. And now the time, it is how much? 1.5 years. This is nothing but 3/2 years. And now if we double it, 2 will be cancelled, it will be 3 half years. Half year का मतलब a duration of 6 months. तो आप देखेंगे कि 1.5 साल में 6 months के 3 span आएंगे और इसलिए 3 half years we are writing it. Next we need to find the amount. It is given as P into 1 plus R by 100 raised to power n, and this is now 62,500 into 1 plus rate. Here it is 4 now. 4% लेंगे जो कि हाफ ईयरली के लिए है यहाँ पर, और upon 100 and raised to power 3 this time. This will be 62500. And now we can write it directly as 104 upon 100 raised to power 3. 104 और 100 दोनों ही even numbers हैं. Let us divide by 2. It will give us 2 5s are 10 and 2s are 4. Here we have 50. Again we can divide by 2. It will go 25 times and here 2 2s are 4, 2 6s are 12. तो हमें क्या मिल रहा है? 62500 into 26 upon 25 raised to power 3. Let us now take a new page. This will be equal to 62500 into 26 by 25. 3 times लिखेंगे हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पावर है 3, तो 3 times multiply होगा. Now we can divide here. 625 is 25 square. तो हम डिवाइड कर सकते हैं 25 ones और ये जाएगा 25 times and 2 zeros. Then again 25 ones here 1 time and 2 zeros. Again 25 ones and 4 times 100. So we have 4 into 26 whole cube. If you find the cube of 26, you will find it as 17,576. Now simply multiply. 4 6 are 24. 2 carat, 4 7s are 28 and 2, it's 30, 3 carat, 4 5s are 20, it will be 23, 2 carat, then 4 7s are 28, again 30, 3 carat, and we have 70,304. This is the amount at the end of the required or given time, and it is rupees 70,304. Then the compound interest, it is amount minus the principal, and here we will write rupees 70,304 minus rupees 62,500, which is the principal. Subtract, you will get 04. 13 minus 5, it's 8. Cancel it. 9 minus 2, it's 7, and then rupees 7,804. This is the compound interest in this question. Next we have D part, rupees 8,000 for 1 year at 9% per annum compounded half yearly. Again it is the case of half year computation, and again we will first get the half of the rate and the double of the time. Let us write. P, it is rupees 8,000.
then the rate, it is 9% per annum, and this will be equal to 9/2% per half year. हाफ कर देंगे रेट को, देखिए आप, और टाइम कितना हो जाएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n, और वो हमें दिया है यहाँ पर 1 ईयर, और एक साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, ऑब्वियसली 2 टाइम्स वी विल गेट हाफ ईयर्स, सो वी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड वी राइट 2 हाफ ईयर्स. नाउ amount, it is p into 1 plus r by 100 raised to power n. p is 8000, 1 plus 9/2, तो 9 यहाँ रहेगा, 2 into 100 हो जाएगा ये, और पावर हो गई आपकी 2. This will be 8000 into 1 plus 9/200 raised to power 2. This will be 8000 into, ये हो जाएगा 200 1 ज़ा 200 प्लस 9, तो 209/200 रेज टू पावर 2. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सम लॉन्ग कैलकुलेशंस आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड हियर. 8000 into 209/200 into 209/200. ये 2 zeros कैंसिल हो गए, 1 0 will be cancelled. Now we can divide by 2. 2 10s are here and 2 4s are. Again by 2, 2 1s are, 2 2s are. Here we can divide by 2 1s are 2, 2 5s are 10. We are left with 209 into 209/5. तो 209 का हम स्क्वायर करते हैं. 209 into 209. 9 9s are 81. 9 2s are 18, multiply, then 2 9s are 18 and 2 2s are 4. This gives us 8, 16 here, 3 and 4. 43,681. This is being divided by 5. Let us divide. This will give us 5 8s are 40, 36, 7s are 35, 1 8, 3s are 15, 3 1, 6 are 30. Then 1 0, 2 times 10, and here we will write 1 0 also. So this is the result of division. यहाँ से हम amount लिख सकते हैं. Amount is rupees 8736.20, and the compound interest, it is amount minus the principal, that is rupees 8736.20 minus rupees 8000, which is the principal here. Subtract कीजिए, you will get it 736.20 rupees. This is the compound interest. Okay, you can also verify your answer by finding the interest for each successive half year separately by using the simple interest formula, and then keep on adding the interest into the principal to get the principal for each successive half year. आप उस मेथड को यूज करते हुए इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव वन मोर पार्ट, एंड दिस इज वन. Rupees 10,000 for 1 year at 8% per annum compounded half yearly. Again, first we write the principal, it is rupees 10,000. Then we find the rate, it is 8% per annum. And this will be half now, 4% per half year. And then the time, it is 1 year. And in case of half yearly computation, we will double it. It will be 1 2 the 2 half years. एक साल में 2 बार हमें हाफ ईयर मिलेंगे 6 months के डिफरेंस पर. नेक्स्ट वी हैव अमाउंट. लेट अस राइट P into 1 plus R by 100 raised to power n. P is nothing but 10,000. 1 plus R will be now 4 upon 100 raised to power n, which is 2 in this case. This will be 10,000, और इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे 104 upon 100, और क्योंकि पावर 2 है तो 2 times we will be writing.
These two zeros will be cancelled. These two zeros will be cancelled. Here we have 104 into 104. Simply need to multiply. Let us multiply. 4 4s are 16. 4 1s are 4. Then here we have 104. It will be 16, 8, 0 and 1. So this is the rough work. This will be equal to rupees 10,816. ये तो हो गया अमाउंट और फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है. So compound interest will be amount minus the principal, rupees 10,816 minus rupees 10,000. This will be equal to rupees 816. So this is the answer to this question. Next we have question number 2. Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. तो इस बार annual calculation है. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? तो अब हमें यहाँ पर amount पता करना है और time है 2 years 4 months. We begin by taking the principal. It is given as rupees 26,400. आपका रेट है 15% per annum. And then the time N. This is nothing but 2 years 4 months. अब ये जो months है इनको years में convert करना होगा. कैसे करेंगे? हमने बात की थी we divide it by 12. तो ये भी years हो जाएंगे. And this will be nothing but 1/3. So the time is 2 1/3 years. ठीक है, तो अब आप दो तरह से कर सकते हैं. पहले तो 2 years का अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए और उसके बाद रिमेनिंग 1/3 ईयर 1/3 ईयर का अलग से इंटरेस्ट निकाल लीजिए. तो फिर दोनों को आप एड अप कर सकते हैं या फिर आप एक साथ दोनों को लेकर चलें. तो हम कैसे करेंगे? लेट अस सी हियर. वी राइट हियर amount is P into 1 plus R upon 100 raised to power n. Now the principal is 26,400. 1 plus 15 upon 100 raised to power 2 1/3. यहाँ से जो होल नंबर है उसको अलग कर लेंगे. 2 तो अलग कर लिया और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ये 1/3 जो है रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 100. इस 1/3 को हमने अंदर रेट से मल्टीप्लाई कर लिया है. दिस विल गिव अस 26,400. हियर वी कैन राइट डायरेक्टली 115 अपॉन 100 रेज टू पावर 2 एंड हियर 3 5s are 15. दिस विल बी 1 plus 5 upon 100. नेक्स्ट वी कैन कैंसिल दीज टू नंबर्स ऑल्सो. अगर हम 5 से करें 5 2s are 10 and 0. 5 2s are 10, 15 है तो 3 times. Then we can write 26,400 into 23/20 into 23/20. पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 105 upon 100. इसको भी अगर हम 5 से डिवाइड करें it will be 20 and here we will have 21. Next cancel this 0 here, this 0 here. We can divide by 2. 2 1s are 2, 3s are 6, 2 2s are 4. Next by 2 it will give us 2 6 are 12, 6 are 12. Again we can divide by 2. 2 10s are and here we will have 33. तो अब हमारे पास क्या बचा देखिए आप. 33 into 23 into 23 it will be 529 into 21 upon 10. If you multiply these three numbers, you will get it as 366,597 and upon 10 here. So this will be 366,59.7. एक ज़ीरो है उसको कैंसिल करके यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिया है हमने और ये हो गया हमारा अमाउंट. We can write it at the end also. A is equal to rupees 36,659.70. अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है. देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है. देखिए ओनली अमाउंट हैज़ बीन आस्क्ड. What amount will she pay at the end of this time? So actually this is the amount. We have not been asked
the compound interest. So this amount she will have to pay at the end of the given time. Okay. Next we have question number 3. Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है. एक तो है फेबिना जिसने 12,500 रुपीज़ बोरो किए 12% रेट पर 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे. देखिए आप. और नेक्स्ट पर्सन इज राधा. शी बोरोड द सेम अमाउंट. उसने भी 12,500 ही बोरो किए एंड फॉर द सेम टाइम 3 साल के लिए ही, पर रेट इस बार डिफरेंट है 10% एंड कंपाउंडेड एनुअली. हु पेज मोर इंटरेस्ट? तो यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है फर्स्ट केस. सेकेंड केस है कंपाउंड इंटरेस्ट का. और हमसे पूछा है कि कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है और कितना. Let us begin the solution. First we write the principal, which is rupees 12,500. Then the time is also same. N. It is same 3 years. Then first we take the case of Fabina, जहाँ पर आप देखेंगे रेट है 12%. ठीक है. For Fabina, rate is 12% per annum. And then the simple interest, it will be principal into rate into time, which we have taken as small n upon 100. Principal आपका है देखिए 12,500, rate हो गया 12 और time है 3 years upon 100. Cancel the 2 zeros. It will be 125 into 12 3s are 36. So we can multiply 125 into 36. 6 5s are 30, 3 carried, 6 2s are 12 and 3 15, 1 carried, 7 here, 3 5s are 15, 1 carried, 3 2s are 6 and 1 7, 3 1s are 3, 0 0, here we will have 15 and 1 here 45. So in all we will have rupees 4,500. This much interest Fabina will have to pay. Then we talk about राधा. राधा के केस में क्या है? 10% रेट हो जा रहा है, टाइम और प्रिंसिपल सेम है. सो वी टेक द केस ऑफ राधा. फॉर राधा नाउ द रेट इज 10% पर एनम एंड फॉर दिस वी नीड टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? इट इज गिवन एज अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस P हो जाएगा. ये अमाउंट की जगह हमने उसका एक्सप्रेशन लिख दिया है और आगे माइनस P. नाउ लेट अस प्लेस इन द वैल्यूज. P के लिए आ जाएगा 12,500 जो कि है प्रिंसिपल. 1 प्लस नाउ द रेट इज 10% फॉर राधा अपॉन 100 and the time here is again 3 years minus 12,500. Now next this will be 12,500 and 110 upon 100 raised to power 3 minus 12,500. यहाँ से 12,500 into this 0 will be cancelled and we will have 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10 minus 12,500. On simplifying we will get this as 12,500. 11 cube it's 1331 और 10 cube it's 1000 minus 12,500. कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम ये 12,500 को कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पर आप देखिए ये जीरोस कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि बीच में है माइनस. हाँ, आप ये जीरोस ज़रूर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि बीच में है मल्टीप्लाई. बट हियर फर्स्ट वी विल बी टेकिंग द कॉमन नंबर आउट. 12,500 को बाहर ले लिया, अंदर बच गया 1331 अपॉन 1000 माइनस ये पूरा नंबर बाहर चला गया तो उसकी जगह होगा 1 हियर. इन दिस वे again on simplifying we get it as 12,500 into 1331 minus 1000 1 जा 1000 हो जाएगा यहाँ पर
upon 1000. This will give us 12500 into 331 upon 1000. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ये दो जीरोस कैंसिल हो गए. We can now multiply 125 and 331, or first we can divide these two numbers by 5. 5 2s are 10 and here we will have 25. So it's now 331 into 25. Multiply करते हैं. 25 1s are 25, 2 carried. 25 3s are 75. Then we will have 77, 7 carried. 25 3s are 75 and 7. It will be 82. So this is 8275. Let us write it here. 8275. अब इसको 2 से डिवाइड करना है. 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, then 1 will be left 15, 7s are 14, 1 0, 5s are 10 and place 1 0 also. So it's 4137.50. This much is the compound interest which Radha will have to pay. तो अब दोनों को कंपेयर करते हैं. राधा को देना है 4137.50 और फेबीना को पे करना होगा 4500. तो अब बताइए कि किसको ज़्यादा पेमेंट करना है. ऑब्वियसली आप देखेंगे कि फेबीना का इंटरेस्ट ज़्यादा है राधा के केस से. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेस्ट्स. ₹4500 ये तो है फेबीना का इंटरेस्ट, और फिर राधा के केस में है 4137. हियर वी हैव 0.50. अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ भी पॉइंट लगाकर 2 0 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. ये तो 0 हो गया. 10 - 5 इट विल बी 5. कैंसिल हियर. 9 - 7 इट विल बी 2. अगेन 9 - 3 it will be 6. Here we will have 4 - 1 as 3. So 362.50 rupees. ये हो गया difference, and hence who will have to pay more interest? Febina pays more interest by rupees 362.50. Getting it? Next we have question number 4. I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? यहाँ बात हो रही है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपीज़ बोरो किए at 6% per annum सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किए. अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट पर बोरो किए होते तो मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता, ये है क्वेश्चन. तो यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे. सो फर्स्ट वी राइट द प्रिंसिपल विच इज़ ₹12,000. देन वी राइट द रेट विच इज़ 6% per annum. And then first we will find the simple interest and then the compound interest. Time of course here is 2 years. Simple interest, it will be P into R into N upon 100. It will be 12,000 into R which is 6 here and then 2 upon 100. ये दोनों cancel हो गए. Here we will have 6 2s are 12, 12 12s are 144 and 1 0. This much is the simple interest for 2 years. ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप याद कीजिए प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है दोनों ही ईयर्स के लिए. प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 12,000. ओके, नेक्स्ट वी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम केस. वी टेक अ नेक्स्ट पेज. Compound interest, it is amount minus the principal, and amount is nothing but P into 1 plus R upon 100 raised to power n minus the principal. P है हमारा कितना देखिए 12,000. So 12,000 1 plus 6 upon 100 raised to power 2 minus 12,000 हो जाएगा ये. This will be 12,000 into 106 upon 100. डायरेक्टली कर रहे हैं हम. रेस टू पावर 2 माइनस 12,000. इनको हम कैंसिल कर सकते हैं. 2 5s are 10,
0, 2 5s are 10 and 3s are 6. Next we can write 12,000 into 53 into 53 upon 50 into 50 minus 12,000. ऐसे केस में हम 12,000 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ मिलेगा हमें 53 स्क्वायर अपॉन 50 स्क्वायर माइनस 1. ये बाहर चला गया, इसकी जगह 1 लिखेंगे. दिस विल बी 12,000 into 53 square, it's 2809 and it will be 2500 minus 1. Next we will get 12,000 into 2809 minus 2500. ये 1 से multiply हो गया and here we have 2500. This will be 12,000 into subtract, you will get 09 and 8 minus 5 it's 3 upon 2500. ये दो zeros cancel हो गए. 5 से divide कर सकते हैं. 5 5s are, here we will have 5 2s are 10, 2 0, 4s are 20. Then we can multiply 309 and 24. Let us multiply. 4 9s are 36, 4 3s are 12, 2 9s are 18, 2 3s are 6, 6 8 and 3 11, 1 carried, it will be 4. Here we have 7, 7 4 1 6 upon 5. इसको रिमूव कर लेते हैं रफ वर्क को. We get it as 5 1s are 5, 2 4 24, 4s are 20 41, 8s are 40, 16, 3s are 15, 1 left, 2s are 10 and 0 we can write. So this is the compound interest for 2 years and let us compare it with the simple interest. It is 1440 and this is 1483.20. So obviously this is greater than the simple interest and let us now compare these two by finding the difference. It's rupees 1483.20 minus 1440. ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट. दिस विल बी 0.00, subtract, it will be 20, 3 here, 8 minus 4, it will be 4 and now the difference is rupees 43.20 and obviously the extra amount that the person will be paying in the case of compound interest, it is rupees 43.20. Okay, next we have one more question. Question 5. Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months and after 1 year? So here Vasudevan has invested rupees 60,000. First we write the principal which is rupees 60,000. Then here the rate, it is 12% per annum and it is being compounded half yearly. So the rate will be 12% per annum पूरे साल के लिए और हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा 6% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा in case of half yearly computation. ठीक है, अब हम केस लेते हैं पहले जब टाइम है 6 months का. Let us take that case. Amount after 6 months. Here the time is 6 months and in years it will be half year. और क्योंकि हम हाफ ईयरली कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो टाइम डबल हो जाएगा, हमने बात की थी. सो वी कैन राइट इट एज 1/2 ईयर. हाफ का डबल 1 हो जाएगा और इट विल बी 1/2 ईयर. अब देखिए 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करने के लिए ये कैंसिल हो गए तो 1/2 ईयर मिलेगा 6 months का जो टाइम स्पैन है. नाउ वी कैन इजीली फाइंड the amount after 6 months. It will be given by P into 1 plus R upon 100 raised to power n. P is your 60,000. 1 plus R rate, it is how much? 6% half yearly. So 6 upon 100 and the power here is 1/2 year. This will give us 60,000 into, this can be written as 106 upon 100 on simplifying और पावर 1 है तो एक ही बार लिखेंगे.
Cancel these two zeros. This will give us 6 6 are 36, 6 1s are 6 and 2 zeros. So this is the amount at the end of 6 months. Let us take the case where we have to find amount after 1 year. So in this case the time it's 1 year और क्योंकि हाफ ईयरली कंप्यूटेशन हो रहा है तो डबल हो जाएगा, 2 हाफ ईयर्स हो गए इसमें. और ऐसे केस में अमाउंट आपका हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर N. P is 60,000. 1 plus rate is 6 upon 100 and the time this time is 2. This will be 60,000. 106 upon 100 power 2. We can divide by 2 50 times. Here we will have 53. This will give us 60,000 into 53 upon 50 into 53 upon 50. ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल. 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं 120 टाइम्स. देन 5 2s are 10, 4s are 20. This will be 24 into 53 square which is 2809. दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2809 into 24. 4 9s are 36, 4 8s are 32, 3 carried, it will be 11 here. Then 2 9s are 18, 2 8s are 16, 1 carried, it will be 5. 6, 8 and 3 11, 4, 7 and 6. So it will be rupees 67,416. This much amount will be paid after 1 year. Next we have question number 6. Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. तो यहाँ पर आपको देखिए ये तो दिया है प्रिंसिपल 80,000 रुपीज़, आपका रेट है 10% और टाइम है 1.5 ईयर. और पहले आपको एनुअल कंप्यूटेशन करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का और फिर हाफ ईयरली कंप्यूटेशन करना है और फिर दोनों ही केस में जो अमाउंट आ रहे हैं उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट वी राइट द प्रिंसिपल. इट इज रुपीज 80,000. Then we write the rate which is given as 10% per annum and the time is 1.5 year. 10% per annum and time is how much? Small n से denote कर रहे हैं हम इसको 1.5 year. जब हम एनुअल कैलकुलेशन करेंगे तो रेट लेंगे हम 10% और जब हम हाफ ईयरली कंप्यूटेशन करेंगे तब हम लेंगे 5% हाफ ईयरली. तो दोनों ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं. इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, लेट अस फाइंड द अमाउंट. P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n. प्रिंसिपल आपका है 80,000. 1 प्लस आर, रेट आपका कितना है 10%. 10 अपॉन 100 और पावर आपकी हो जाएगी 1.5. देखिए आप ऐसे केस में 80,000 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर 1 अलग कर देंगे और हाफ को अलग कर लेंगे. ठीक है. दिस विल गिव अस 80,000. ये हो जाएगा आपका 110 अपॉन 100 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ इंटू 10. ये जो पावर है ये रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी. दिस विल बी कैंसल्ड, वी विल गेट 5 हियर. सो दिस इज कैंसल दिस 0. 80,000 इंटू 11 by 10 and this will be 105 upon 100. We can cancel this 0 and in the end we will have 880 into 105. देखिए आप 80 into 11 it will be 880 and into 105. Let us multiply 88 and 105. 8 5s are 40, 8 1s are 8. Again 40 and 8. This is 0, 4, 12 and 9. So this will be nothing but rupees
9240 and one more zero, this one. So 92,400. This is the amount in case of annual computation. अब यही केस हम लेंगे for half yearly computation. Let us take for half yearly computation. Again the principal is rupees 80,000. Rate, it is 10% for annual computation and 5 for half yearly computation. So 10% per annum and 5% per half year. And now the time, N, it is how much? Have a look, 1.5 year. This is 3/2 years. And for half yearly computation we get its double. Double कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 3.5 years. ठीक है, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और 3 बच जाएगा. Now we find the amount. P into 1 plus R upon 100 raised to power n. P is 80,000. 1 plus R ये हो गया आपका 5 और पावर हो गई 3. यहाँ से 80,000 इंटू ये हो गया 105 अपॉन 100 हो गया 3 डिवाइड बाय 5 20 times 21. This will give you 80,000 into 21 into 21 into 21 3 times upon 20 20 and 20. These 3 zeros will be cancelled from here. Then 2 2s are 4, 4 2s are 8 और यहाँ भी 8 है तो ये 8 कैंसिल कर देगा 10 times 80 को. डायरेक्टली हमने कर दिया. Now we have 21 cube. If you will solve it, you will get it as 9,261 and in all we will get the amount as 92,610. ये हो गया amount in case of हाफ ईयरली कंप्यूटेशन. अब हमें दोनों ही अमाउंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ये तो हो गया हाफ ईयरली कंप्यूटेशन का और ये हो गया ईयरली कंप्यूटेशन का. सो लेट अस राइट हियर द डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट्स. फर्स्ट वी विल राइट द केस ऑफ हाफ ईयरली कंप्यूटेशन. ये बड़ा है तो 92,610 एंड माइनस the case of annual computation which is 92,400. दोनों का difference find out करेंगे. Here we will have 10 and 2. So the difference is of rupees 210 and this was asked here. So these were the first 6 questions of exercise 8.3. Though they were lengthy, but I hope you have understood them well. In our next video we will do the remaining questions of the same exercise. Goodbye.